So we have completed central tendency, that is mean, median and mode, and we have completed asymmetry and how we measure asymmetry with the help of skewness, right skew, zero skew and left skew. So now we'll be continuing with variability. Okay. So variability can be split into three parts, that is variance, standard deviation, coefficient of variation. We measure variability with help of these three things. Okay, so we have different formulas for sample and population for variance. Why is it so? There is a reason. I'll be showing you in the next slide. Like we have different formulas for sample and population because population is the exact thing and sample just represents the population. It exactly doesn't represent the population, but it approximately represents the population. It depends upon the what sort of sample we are actually picking up. Okay. Then while measuring population, we get 100% of the results. Okay, we get 100% of the results. Everything is perfect while measuring population. अगर सारा डेटा हमारे पास है तो हम पूरा perfectly हम उसे calculate कर सकते हैं, उसे analyze कर सकते हैं. But what if we are measuring a sample? क्या करेंगे? So there is a thing that we have done. Then the statisticians have done actually. So when you take the sample data, why I was asking this? Why I was asking this? Because when you take different 10 different samples, it gives 10 different measures. Okay. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉलेज का प्लेसमेंट चाहिए तो आपने क्या किया कि दो ईएनटीसी का लिया, दो इलेक्ट्रॉनिक्स का लिया, मैकेनिकल का लिया, कंप्यूटर का लिया. लेकिन अभी सेम सैंपल दूसरे बंदे को आना जरूरी नहीं है क्योंकि उसने किसी और तीन जन को पिक किया, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 कंप्यूटर साइंस, उसने किसी और को पिक किया, आपने किसी और को पिक किया. हो सकता है आपने टॉपर पिक किया होगा, उसने टॉपर नहीं पिक किया होगा, या फिर आपने एक ऐसे आदमी को पिक किया होगा जो बहुत क्यूरियस है, मतलब इंडस्ट्री ओरिएंटेड गाय है कि मतलब उसे प्लेसमेंट चाहिए करके वो फर्स्ट ईयर से डे 1 से प्रिपेयर कर रहा है. आपने ऐसे आदमी को उठाया होगा like in a sample, but that guy might not have picked. So how can you give, like he's having different sample set, you are having different sample set. आपके हिसाब से सैंपल कैसे आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि एवरेज प्लेसमेंट हमारे कॉलेज का 10 लाख पर एनम है और उसके हिसाब से एवरेज आ रहा है कि 6 लाख पर एनम है क्योंकि आपने अच्छे स्टूडेंट्स को उठाए होंगे. पॉसिबल है ना. सो 10 डिफरेंट थिंग, लाइक ये अमेरिकन स्टेट्स ले लो आप काइंड ऑफ. सो मिशिगन में ऐसा है, देन कनाडा में ऐसा है, then I don't remember, ये वॉशिंगटन में ऐसा है. ओके, सो दीज आर दी थिंग्स. तो अभी कैसा है कि मतलब हर एक जगह पे अलग अलग डेटा वेरी करेगा. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ सैंपल्स यू पिक. ओके, सो हेंस वी फिक्स, हाउ वी फिक्स, बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन एंड डिफरेंट फॉर्मूला फॉर सैंपल. सैंपल के पास हम थोड़ा सा टॉलरेंस रख लेते हैं. थोड़ा सा टॉलरेंस रख लिया तो फिर ऐसा होता है कि मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा आगे जा सकते हैं हम. हाँ, तो मतलब मैक्स टू मैक्स यहाँ तक वेरी कर सकता है या फिर मैक्स टू मैक्स कुछ हद तक कर सकता है. फॉर एग्जांपल आपने जो सैंपल उठाया, अगर आपको रिजल्ट आ भी रहा है कि 10 लाख है, 10 लाख का पैकेज आ भी रहा है, तो भी आप क्या करोगे कि आप एक टॉलरेंस लेकर के चलोगे. नहीं, मैं 8.5 पकड़ता हूँ या फिर 1.5 का आपने वेरिएंस एरर के हिसाब से आपने रख लिया. ठीक है. So what would be that? You have put in a tolerance. So 1.5 lakhs का आपने tolerance रख लिया. So that means you will be giving a value that is 8.5 lakhs per annum. ये एवरेज पैकेज मिलता है स्टूडेंट्स को, आपने जो एनालिसिस किया है कोई कॉलेज में जाकर के. लेकिन आपके जैसा ही दूसरा बंदा जिसने नॉर्मल स्टूडेंट्स को उठाया, उसके हिसाब से डेटा आ रहा है कि 7.5 या फिर 8 lakhs. So that won't vary much. इसीलिए हमने सैंपल का पॉपुलेशन, सैंपल का फॉर्मूला और पॉपुलेशन का फॉर्मूला हमने थोड़ा डिफरेंशिएट किया. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल फॉर्मूला एंड पॉपुलेशन फॉर्मूला. डिनोमिनेटर में बहुत फर्क है दोनों में. सो इफ यू सी, मीन तो दोनों का सेम है, मीन से कोई लेना देना नहीं. आप सैंपल का मीन ले लो, आसपास ही आएगा, पॉपुलेशन का मीन ले लो, आसपास ही आएगा, लेकिन आप मीन से कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हो. आई हैव टोल्ड यू इन द स्लाइड इटसेल्फ. एंड व्हेन यू आर हैंडलिंग द प्रोजेक्ट, व्हेन यू आर हैंडलिंग एनी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, प्लीज डोंट कम टू द कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द मीन वैल्यू दैट यू गेट. ठीक है, बस मीन वैल्यू से आप कोई कंक्लूजन में नहीं आ सकते. You need some analysis. Mean, median, mode तो एक तरीका हो गया, एक kind of you will be 10 या फिर 25% sure कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, मे भी हो सकता है.
डेटा कैसा है हमें पता नहीं है ना, सिमेट्री है असिमेट्री, सिमेट्री है तो हम मीन मीडियन मोड से कर लेते हैं, असिमेट्री तो स्क्यूनेस से कर लेते हैं, लेकिन व्हाट इफ द डेटा इज कंप्लीटली डिफरेंट, व्हाट यू विल डू? So that's why we are doing this, we have to measure the variance, okay? So now we are going for variance. So variance measures the dispersion of a set of data points around their mean, कि मीन से कितना दूर जा रहा है, मीन से कितना दूर जा रहा है, मीन से कितना पास है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, कंसीडर दैट दिस इज अ मीन, ये कितना दूर है, ये यहां तक जा रहा है और यहां तक जा रहा है, मतलब मेरा वेरिएंस इतना बड़ा आ गया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। पॉपुलेशन के लिए ऐसा है, सैंपल के लिए ऐसा है। पॉपुलेशन वेरिएंस में लाइक द सिग्मा आई टू एन, ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू, म्यू मीन्स मीन, ओके, इन दोनों का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एन, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन यहाँ n माइनस वन किया जाता है। अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले कि इसे स्क्वायर क्यों किया जाता है। स्क्वायर से दो फायदे हैं, ओके, आई टेल यू स्क्वायर से क्या क्या फायदा है। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा मीन है समझो, ठीक है, और मेरा कोई वैल्यू यहाँ आ रहा है। आई एम नॉट कंसर्न विद दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आई एम जस्ट कंसर्न विद द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्पर्शन, ये कितना डिस्पर्शन होता है, यहाँ कितना डिस्पर्स्ड है, ठीक है, मैं डी आई लिख रहा हूँ बस कि कितना डिस्पर्स्ड है, ये जो लेंथ है ये मेरा कंसर्न का है। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट पुट अ स्क्वायर, ताकि मैं नेगेटिव वैल्यूज को निकाल दूं। जब आप कोई नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव में आ जाता है, ओके। when you put a square you get a positive, and when you put a square for the positive value still you will get positive, so you just need a positive value to so that you can come under the conclusion कि हाँ ठीक है इतना इतना वेरी हो रहा है, ठीक है, and that too आपको ज्यादा means you will get a bigger variability, like अभी for example इन दोनों का distance अगर 10 है, जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको 100, so आप you will be aiming for how much the data is dispersed and ये 100 तक क्यों वेरी हो रहा है, so then after that you will be taking a square root or standard deviation, ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन ये सबसे important है, ये सबसे important। so this thing hope you know, ये statistics में तो आपने पढ़ा ही होगा। so this is population variance and this is one of the most important one, okay, and this is sample variance। यहाँ हम n-1 करते हैं because थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आएगा, राइट, हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, लाइक इन एक्सेल आई हैव मेड अ डेटा सेट, या सो दिस इज द पॉपुलेशन, ओके, ये पॉपुलेशन, मतलब ये समझो कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स हैं, इसका मीन आ गया 3, ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस आ गया 2, लेकिन सैंपल वेरिएंस आया 2.5। Why? Because population variance we had all the data, हमारे पास सारा डेटा था, लेकिन हमारे पास सैंपल में हमें पता ही नहीं कि ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है, तो हमने वहां हमें थोड़ा वहां अनसर्टेनिटी होता है, तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया फॉर्मूले को। ये एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आता है ऐसा फॉर्मूला सैंपल के लिए। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट सैंपल variance, one second, sorry, yeah, sample variance, so what you do is you just put equal to sign and you just put a variance. So if you go for variance, so here it is sample, see, based on sample, and if you go for here it based on entire population, so it is based on sample, okay। so मैंने sample click किया and I just want इसका variance, so it will give me 2.5, I got here the same 2.5, here also same this population, अगर population का variance चाहिए तो population where लिख देता हूँ बस। So population variance, if you want population variance, so you just have to click variance population and you can drag it and you'll get the value 2, तो आपको 2 मिल गया। अगर मीन का तो मैंने आपको बताया था, राइट, ये मीन से कितना दूर जाता है, हाँ, ये अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसे x बार से माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मीन से एंड उसका स्क्वायर कर देते हैं। So this is the way how you calculate sample variance. For example, अभी sample variance कैसे calculate करूँ? Okay, we'll add a sheet over here. Okay, so I'll just give you a small task: 1 2 3 4 5. So you have to calculate the sample. Wait a second. 6 7, तो पहले ही देख लिया था आपने। So 8 तक का मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ। You take odd number of variables, आपको भी जल्दी मिल जाए। So you have these data sets, okay, you just have to calculate sample variance, okay। How do you calculate manually? पहले तो मीन तो निकल गया हमारा,
सो हम क्या करेंगे, 1 - 5, ओके, इसका स्क्वायर होगा 1 - 5, सेकेंड वाले कॉलम में 2 - 5, ओके, देन कम्स 3 - 5 एंड सो ऑन, ये पूरा आ जाएगा मतलब टिल 8 - 5 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ तक मिल गया आपको, then what you do, you just divided by n because it's summation, okay, summation। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका आएगा 16, then this will be 9 and this will be 4 and this will be 1, this will be 0, am I right, this should be 0, yeah, so then this will be 1, तो same order में continue होगा, then 9, then no, it should be over here, right, so this will be 16, okay। तो इस सब का सम लेना पड़ेगा हमें, I'll just do the shortcut। So what would be sum, 25, 29, 30, 30, 30 would be 60. So 60 divided by, there are 9 values, 60 divided by 8. So 60 by 8 should be the answer. So what would be 60 by 8? 7.5. Let us check with the formula whether it is giving me exactly 7.5. Yeah, so it is giving me 7.5. Are you not getting it? कैसे किया, कैसे आया? यही अगर मैं पॉपुलेशन मीन पूछता तो फिर यू शुड डू दिस, 60/9 आएगा, ये पॉपुलेशन वेरिएंस आएगा इसका, दिस वुड बी पॉपुलेशन वेरिएंस, ओके, इट वुड बी 6.6667, या, सो पॉपुलेशन वेरिएंस कम आ रहा है, सैंपल वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, बिकॉज इट इज एज्यूमिंग कि ये इतना वो टॉलरेंस दे रहा है, ओके, दैट्स एन एरर, हाँ, वो थोड़ा सा छोटा सा एरर होता है सैंपल में, विल बी डिस्कसिंग हाउ टू एलिमिनेट दैट एरर, हाउ टू फाइंड दैट, हाउ टू पुट दैट असम्पशंस एंड ऑल, हम बाद में देखेंगे, अभी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बस आज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, देन कल कल से फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यू लाइक दैट थिंग, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपको अननोन डेटा का भी कैसे यूज करना है वो भी आपको पता चल जाएगा, ओके। सो हियर इफ यू सी, अभी अगर मैं इमेजिनरी पॉपुलेशन लेता हूं तो फिर इसमें देखो सैंपल वेरिएंस होता है इतना और पॉपुलेशन वेरिएंस होता है इतना और मीन होता है 3.2, तो मीन से ज्यादा आ रहा है सैंपल वेरिएंस, हाँ, लेकिन मीन से कम आ रहा है पॉपुलेशन वेरिएंस, आर यू गेटिंग इट? सो देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन, ओके। सो सैंपल और पॉपुलेशन का फॉर्मूला अलग है, ठीक है। Our sample variance has rightfully corrected upwards in order to reflect the higher potential variability। यहाँ यहाँ ज्यादा है, देखो ये, अरे यार, हाँ यहाँ ज्यादा है, ठीक है, यहाँ वैल्यूज रिपीटेड ज्यादा है नीचे की तरफ, तो अगर आप इसका स्क्यू बनाने जाओ तो ऐसे आएगा, मतलब बम्प इस तरफ आएगा, दिस विल बी नेगेटिव स्क्यू, दिस विल बी नेगेटिव स्क्यू, so let me see if it's really a negative skew or it's a normal kind of a thing, because ऊपर भी हमारे पास 3 वैल्यूज है, so you cannot classify it into a negative skew, okay। यहाँ 4 वैल्यूज है, आई एम जस्ट टेलिंग इफ इट्स असिमेट्रिक डेटा, ये सिमेट्रिक डेटा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ हम स्क्यू अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। सो नाउ विल जस्ट गो फॉर, नहीं ये अभी ये टॉपिक अभी बताया नहीं, या, सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अगर मैं 1 2 3 4 5 तक का ले रहा हूँ तो ये फॉर्मूला है, और ये सैंपल के लिए डिवाइड बाय 4 करते हैं, ओके। सो स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ, इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ओके। ये था ना हमारा वेरिएंस, इसका स्क्वायर रूट कर दो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। क्यों क्यों इसका स्क्वायर रूट लेते हैं? क्योंकि देखो अभी मैं ये वाले एग्जांपल में जाता हूँ, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ इट्स, ओके। सो ये वाला एग्जांपल, अभी अगर मैं इसका, अगर मैं वेरिएंस निकालूं, ओके, इफ आई फाइंड द वेरिएंस, इफ आई फाइंड द वेरिएंस, सो दैट वुड बी डॉलर स्क्वायर। अभी न्यूयॉर्क में पिज्जा का प्राइस का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, सो इट्स न्यूयॉर्क में कौन से एरियाज में कितने में मिलता है, इट्स नॉर्मल डेटा है ना, ये रियल डेटा नहीं है। सो न्यूयॉर्क में अभी फॉर एग्जांपल कोई जगह पे $1 में मिलता है और कोई जगह पे $11 में मिलता है, और ये मैक्सिकन
में अगर आप कन्वर्ट करोगे कि अगर वहां दो करेंसीज चल सकते हैं, so वो मेक्सिकन का करेंसी होता है पेसोस, तो वो 18.81 pesos equals to $1 of $1. Okay, so it would be 18.81 Mexican pesos equal to $1. तो इसमें अगर आप देखोगे तो यू विल जस्ट फाइंड दैट व्हेन यू डू दिस, क्या बोलते हैं इसको, जब आप वेरिएंस फाइंड करते हो तो ये डॉलर स्क्वायर आएगा ना वैल्यू। अभी अगर आप मीटर में ले रहे हो तो वो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो, राइट। आप मीन से सब्ट्रैक्ट करके इसको स्क्वायर कर रहे हो, माय राइट, बिकॉज यू आर डूइंग अ स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर वैल्यू जस्ट टू एलिमिनेट द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको रूट भी लेना पड़ेगा और गेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन की डेटा कितना डिविएट हो रहा है एवरी फेज में। Okay, so what you do, these are the steps. Okay, so just tell me, is it a sample or it's a population? Now just tell me in the chat, it's a sample or it's a population? ये जो दोनों डेटा ले लो, सैंपल है या पॉपुलेशन? ओके, दिस इज द सैंपल। ये जो है ये सैंपल है। हमने पूरा हर एक पिज्जा शॉप में जाकर के हमने वैल्यूज नहीं निकाले, तो देयर वुड बी मोर देन 200 300 अगर न्यूयॉर्क सिटी में आप देखोगे। सो जस्ट 200 300 तो मिनिमम हो गया, और भी ज्यादा हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, लाइक मतलब ये बस सैंपल है। मैंने बस ऐसे ही गिना चुना कोई 10-11 शॉप्स ले लिए, मैंने देख लिए कि कैसा है क्या है। ओके, सो देन द सेकेंड स्टेप वुड बी फाइंड द मीन। सो व्हाट वुड बी इट्स मीन? इसका मीन कितना होगा? इसका मीन कितना होगा? So if I write mean over here, इसका आ गया 5.5 एंड इसका आ गया 103.455, ठीक है। एक पेसोस 18.81, मतलब $1 18.81 पेसोस है। ओके, सो इफ आई मल्टीप्लाई 18.81 इंटू 5.5, सेम आ रहा है आंसर? ऑब्वियसली सेम ही आएगा ना, जस्ट यूनिट तो कन्वर्जन है। यहाँ पेसोस के बदले में रुपीस डाल देता तो भी, अगर मैं डॉलर्स को फिर से ये क्या बोलते हैं डिवाइड कर देता, तो फिर मुझे सेम वैल्यू मिलता था जितना $1 का इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कैलकुलेटिंग द वेरिएंस। सो आई विल जस्ट पुट ओवर हियर कि एक सेकंड, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके, यप। सो सेकेंड स्टेप क्या है? कैलकुलेटिंग, थर्ड स्टेप सॉरी, एक्चुअली दिस इज अ सैंपल। सबसे पहले तो इसे बोल्ड में लिखो, सैंपल, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि भाई ये पॉपुलेशन है कि सैंपल है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि वेरिएंस में तो पॉपुलेशन और सैंपल के लिए डिफरेंस है ना फॉर्मूला में। सो वेरिएंस, सो आई जस्ट नीड वेरिएंस ऑफ द सैंपल, सो आई जस्ट क्लिक ओवर हियर। ओके, सो ये मेरे को मिल गया, ये सैंपल वेरिएंस लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ अगेन वेरिएंस ऑफ सैंपल। ओके, ये देखो 3793.64 तक जा रहा है। ओके, वेरिएंस। Now what we do, we calculate standard deviation. Okay, standard deviation क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है। So what we will be doing is equal to this. Oh my God. Sorry. 1 second. Yeah. Raised to 1/2. Okay, 5.366 equal to this value.
रेज टू 1/2. ओके, सो ये आ गया हमें स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कि कितना वेरी करता है, उसका एक वैल्यू होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके, सो या सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन भी बोला जाता है इसको. स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन होता है इसका. जो भी है ये पॉपुलेशन सैंपल के लिए सेम होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन बस हमें स्टैंडर्ड डिविएशन अलग मिलता है दोनों का, और इसका क्या बोलते हैं कि मीन तो दोनों का सेम ही आएगा. ओके, सिग्मा जो होता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर अ सिंगल डेटा सेट. ओके, दिस इज द पॉपुलेशन. वो सिंगल डेटा सेट के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मोस्ट कॉमन मेजर होता है. लेकिन ये जो होता है ये कंपेयरिंग टू और मोर डेटा सेट्स. अभी आप 2-3 सैंपल कंपेयर कर सकते हो यूजिंग दिस. तो दोनों सेम है लेकिन दोनों का सेम वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सिग्मा वेरी कर रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा सिग्मा स्क्वायर और ये इसका एस स्क्वायर वेरी कर रहा है. व्हाट इज एस स्क्वायर? दैट इज वेरिएंस. वेरिएंस का फॉर्मूला दोनों का अलग है, तो अल्टीमेटली ये पूरा वैल्यू वेरी करेगा, दोनों सेम नहीं आएगा. CV is not equal to CV cap over here. Okay, so now how do we find coefficient of variation? This is coefficient of variation. Okay, तो coefficient of variation क्या होगा? That will be standard deviation upon mean. Okay, see this, standard deviation upon mean. So this equals to this divided by this. Okay, if I just take it over here, it will give me the value. इसको मैं delete कर दूंगा. This will be 18.335. ये देखो कितना फर्क आ गया दोनों में, मतलब नियरली अबाउट 20 टाइम्स फर्क आ गया दोनों में. ठीक है, 20 टाइम्स. सो नाउ दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, लेकिन हमें यहां नहीं रुकना है. there's another step after this, that is covariance. So how do you calculate covariance? Covariance ये हमें perfect relation दे देता है. ठीक है, covariance से हमें फिर correlation मिलता है. So now I'll just go with covariance. So what is covariance? This is the formula for sample and this is the formula for population. दोनों का फिर से vary कर रहा है. देखो, दोनों का फिर से vary कर रहा है. अभी हम ये calculate करके देखेंगे. Okay, x minus x bar. I think I might have calculated over here. No, this is a different thing. So okay, okay. कितना वेरी करता है? यहाँ हमें कोवेरियंस इतना ज्यादा मिलेगा नहीं. यहाँ हम कोवेरियंस अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात. क्यों? क्योंकि यहाँ डॉलर्स है, उसके इक्विवेलेंट ही हमें यहाँ पेसोस मिल रहा है. इट इज नॉट लाइक यहाँ डॉलर्स है और ये किसी फैक्टर की वजह से वो चेंज होता है. कोवेरियंस मतलब प्रोपोर्शनैलिटी आता है. प्रोपोर्शनैलिटी देखो, जैसे यहाँ है प्रोपोर्शनैलिटी साइज और प्राइस में. घर खरीदने जा रहे हो, कोई स्क्वायर फीट, यहाँ स्क्वायर फीट आएगा तो 650 स्क्वायर फीट इतने इतने डॉलर्स का है, 785 स्क्वायर फीट, तो ये जितना स्क्वायर फीट बढ़ेगा उतना प्राइस बढ़ रहा है यहाँ. यू गेटिंग इट? सो उसके हिसाब से यहाँ कोवेरियंस निकलेगा. ओके, तो ये मैंने प्लॉट किया है. नाउ लेट मी गो टू द पीपीटी एंड गिव यू सम इनसाइट अबाउट दिस. सो विल बी फाइंडिंग कोरिलेशन, विल बी फाइंडिंग ये क्या बोलते हैं कोवेरियंस एंड ऑल. सो फर्स्ट विल गो विद कोवेरियंस. ओके, कोवेरियंस क्या देता है? गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन देता है. ग्रेटर देन 0 है मतलब दोनों वेरिएबल साथ में मूव करते हैं. लेस देन 0 है तो फिर दोनों वेरिएबल ऑपोजिट में मूव करते हैं. ठीक है, इक्वल टू 0 है तो फिर दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है. दोनों अगर 0 आता है तो वो इंडिपेंडेंट होगा. सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस कोवेरियंस? सो नाउ वी विल गो विद दिस एक्सेल शीट. तो यहाँ साइज देखो. ठीक है, साइज मीन हमने निकाल दिया. ठीक है, हमने फिर क्या किया, इसको ये फॉर्मूला डाल दिया, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. व्हाट इज x बार? x बार मतलब ये x है यहाँ मेरा और ये y है. x बार मतलब इसका मीन, x बार इज 866. अरे यार मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है. अच्छा, बोलने से अच्छा हम एक बार करके दिखा रहा हूँ. सो व्हाट वुड बी माय x? दिस वुड बी माय x. ओके, ब्रैकेट हो गया माइनस दिस. ओके, डॉलर साइन, क्योंकि वो
चेंज नहीं होना चाहिए। मीन तो मेरा उसके पूरे कॉलम में तो सेम है। देन दिस माइनस दिस, so here comes the formula. Okay, so now if I drag this, so it is giving me the same value. Okay, अभी मुझे इसका sum चाहिए, इसका sum चाहिए। So what should be its sum? ये मुझे sum मिल गया। Okay, how many samples are there? 1 2 3 4 5, मैंने बस 5 ही सैंपल लिया है, so sample will be 5. Okay, now what would be my coefficient of variance? Like this is this thing, this thing मैं इसकी बात कर रहा हूँ। No, I'm not talking about coefficient of variation. I'm talking about covariance. Okay, covariance की बात कर रहा हूँ। COV मतलब covariance. Okay, so what would be this? ये हमारे पूरे sum का divided by this. Are you getting it? ये मैंने क्यों निकाला, कैसे निकाला? Because this is the formula for covariance, right? ये हमारा formula है covariance की। हमने x minus x bar into y minus y bar का तो समेशन ले लिया, अभी n minus 1 डिवाइड करना रह गया, राइट? तो अभी मेरे को n minus 1 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरा सम है। सो इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस 1 here bracket here bracket. ओके, तो I'm getting this answer। अभी समझो कि अगर मेरा सैंपल 8 रहता तो उसके हिसाब से बदलेगा। Are you getting it? डिवाइड बाय 7 हो गया। अगर यही 25 रहा तो और कम हो गया वैल्यू, मतलब 24 डिवाइड बाय 24 हो जाएगा। अगर यही मेरा सम अगर कुछ इतना बड़ा कुछ आ रहा है, सो दिस विल बी ओके। आर यू गेटिंग इट? लाइक चेंज होता है सम और सैंपल से। सैंपल अगर जितना ज्यादा बढ़ेगा और आपका टोटल वही आ रहा है, देन इट विल बी चेंजिंग। ओके, यहाँ मैं 5 ही लिख देता हूँ। Okay, so I'm getting the same value. So what is the standard deviation here? क्योंकि हमें correlation coefficient निकालना है। What is correlation coefficient? और वो कितना मायने करता है? This is the correlation coefficient. Okay, adjust covariance so that relationship between two variables becomes easy. दो variables हमें easily पता चलता है कि क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में, x और y के बीच में क्या रिलेशन है। What is covariance between what is the correlation between the x and y? ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मतलब एक बंदा अगर आप कोई अच्छे मतलब टॉपर लोगों के साथ अगर आप फ्रेंडशिप रखते हो, तो आपका स्कोर भी इंक्रीज होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एवरी टाइम दिस डजंट हैपन। सो अगर आप टॉपर के साथ ही घूमते रहते हैं, आप एवरेज स्टूडेंट है और आप टॉपर के साथ ही घूमते रहते हैं, सो यू विल बी लाइक आपका भी स्कोर बढ़ते रहेगा, उसका भी स्कोर बढ़ सकता है और उसके कंपैरेटिवली आपका भी स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आप दोनों उसी वेवलेंथ से डिस्कस करते रहोगे। सो दैट्स अ कोरिलेशन बिकॉज़ you both are going in the same direction, so you both have positive correlation. His impact affects you, so that is how the correlation works actually. So अभी correlation के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? Standard deviation. So this is again a sample, ये sample ही है। okay, standard deviation of sample. okay, this is the standard deviation based on sample. So अभी कौन से sample का निकालना है? x का निकालना है, standard deviation of x। I got this। Now standard deviation of y, so I got this। okay, so now how to calculate correlation coefficient? correlation coefficient कैसे calculate करना है? you just see this is the formula correlation coefficient। ये होने के बाद हमें तो covariance तो मिल गया, right? covariance between x and y, we got the covariance, right? ओके, सो कोवेरियंस मिल गया, तो अभी कोवेरियंस से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। सो आई विल बी पुटिंग दिस फॉर्मूला कोवेरियंस डिवाइडेड बाय ब्रैकेट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। आर यू गेटिंग? दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। सो अभी अगर मैं इसको अप्रॉक्स करता हूं, लाइक इफ आई जस्ट राउंड इट ऑफ,
ओके ये नंबर को समझो कि मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक का राउंड ऑफ कर रहा हूँ, सो इट विल बी गिव मी 0.87। ये पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। सो ये पॉजिटिव क्यों है 0.87? बिकॉज ये कोरिलेशन ऐसा दे रहा है कि जितना साइज बढ़ेगा उतना ही प्राइस बढ़ेगा। कोई घर लेने जा रहे हो, स्क्वायर फीट बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से प्राइस बढ़ता है, राइट? So that is the way it works. That is why it is giving me a positive value. और अगर मैं इसे स्कैटर प्लॉट करता हूँ, अभी स्कैटर प्लॉट कैसे करते हैं फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। यू सेलेक्ट एवरीथिंग, मेरा वर्जन थोड़ा अलग है इसीलिए वो सिर्फ प्राइस दिखाता है, ये साइज नहीं दिखा रहा है। ओके वो एक्स और वाई एक्सिस ठीक से नहीं दिखा रहा है, मेरा वर्जन अलग है ये एक्सेल का, सो प्लीज डोंट माइंड अबाउट दैट। ओके देखो ये वाई एक्सिस में सिर्फ मतलब प्राइसेस दिखा रहा है, मतलब इट्स जस्ट वाई एक्सिस है, हाँ ये एक्चुअली प्राइसेस, तो ये बस प्राइस वाई एक्सिस में दिखा रहा है, दिस इज द स्क्वायर फीट। सो इफ आई गो ओवर हियर तो ये बोलता है कि 1200 वाला जो अगर ये जो पॉइंट है दिस इज 1200 कॉमा 12 नो इट्स 1.2 मिलियन आई गेस, या इट्स 1.2 मिलियन, तो 1.2 मिलियन डॉलर्स में आपको 1200 स्क्वायर फीट का घर मिलता है। एंड हियर इफ यू गो इट इज 975 स्क्वायर फीट, आपको 8 मिलियन नहीं $895,000 में मिलता है, $895,000। ओके so this is the thing that I wanted to show you today, and is there anything left? Let me just see. So yeah, correlation, अभी ये आपको मैं स्लाइड में दिखाऊं, correlation। ओके correlation क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, it cannot be greater than 1, it cannot be less than 0। okay it can be like wait a second now, it can be between -1 to 1, so this should be -1, I made a mistake over here, okay this should be -1, okay -1 से 1 के बीच में होता है, 0 से -1 तक वो नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है। okay so now correlation of 0 means both the variables are independent, correlation of 0 means both the variables are independent, मतलब इंडिया में कॉफी के प्राइस के बेसिस पे आप कॉस्ट ऑफ घर लंदन में दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, ये होता है जीरो कोरिलेशन, कुछ फर्क ही नहीं है। अगर मतलब यहाँ इंडिया में कॉफी का प्राइस जितना भी है उससे वो कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है लंदन के घर का। ओके सो नाउ दिस इज negative correlation of negative correlation of means both the variables are inversely dependent मतलब जिस जिस सीजन पे आइसक्रीम ज्यादा बिक रहा है उसी सीजन पे छाती ज्यादा मतलब ये छाता जो भी बोलते हैं अम्ब्रेला, तो ये ज्यादा बिकेगा नहीं। ओके आर यू गेटिंग इट कि मतलब आइसक्रीम कब बिकता है समर में, और आइसक्रीम में ज्यादा लोग अम्ब्रेला नहीं खरीदते। ओके दोनों इनवर्सली कोरिलेटेड कि मतलब अगर अम्ब्रेला ज्यादा बिक रहा है तो आइसक्रीम कम बिकेगा। Okay, so now we have ended this descriptive statistics. So this is distribution. So in statistics, distribution means probability distribution. क्या probability होता है? So in statistics, distribution means probability distribution. Okay, कि probability कितना होता है, distribution कैसे होता है? For example, this is normal distribution. This is binomial distribution. Actually, this is binomial distribution in the curve band. Okay, actual binomial distribution would be like this. I'll show you. अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा, so binomial distribution would be 1, this would be bigger than this, there would be a middle element that would be more, सबसे बड़ा होता है middle element, then this would be the another data and this would be the another data, this would be smaller data. So the first one and the last one would be similar, the second one and the second last one would be similar. Okay, I will show you, we have made a what do we say, this binomial distribution in the upcoming slide, so I'll be showing that. Okay, so a distribution is a function that shows the possible values for a variable and how often they occur. तो कितने बार आता है, वापस कितना रिपीट होता है, या फिर कितना प्रोबेबिलिटी है उसका, उस बेसिस पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज नथिंग बट नॉर्मली कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है और कुछ नहीं होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डाइस, ठीक है। So what is the probability that we get 4 on the dice? So it should be 1/6, right? 1/6. Okay. So if we take all the values,
कि probability of getting 1, getting 2, getting 3, getting 4, getting 5, getting 6, सबका 1/6 है. So 1/6 is 0.1667. So सबका ही probability यही आएगा. So this is uniform distribution. See, this is uniform distribution. Okay. इसका भी probability 0.1667 है, इसका भी probability 0.1667 है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है. So it won't. There is no variation. In reality अगर आपने डाइस रोल किया तो 2 भी आ सकता है, वापस से 2 भी आ सकता है, वापस से 2 भी आ सकता है. लेकिन what do we say? This is a random experiment, so we just have to proceed with the way of probability way of thinking. We cannot put our assumptions की तुक्का नहीं लगा सकते हैं इसमें कि हाँ ये 2 आया तो मैं वापस ऐसे रोल किया तो 2. So it's a unbiased dice. Okay, so it's an equal opportunity for every number to come on the top. So this is this. Okay. So for example, if we have 2 dice, okay, 2 dice है हमारे पास और उसका एक का probability कैसे होगा? तो पहले वाले का 0.03 होगा. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम ऐसा 1,1, okay, then 1,2 ऐसे करते करते ना टोटल हमारे पास 36 होंगे, right? There would be 36 different sort of outcomes that would be there. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ऐसे 2,1 से 6, 3,1 से 6, 4,1 से 6, 5,1 से 6, 6,1 से 6. Okay, so this happens based on this probability कि दोनों नंबर का एडिशन कितना आता है, तो दोनों डाइस के नंबर्स के एडिशन. Yeah. So now if you see, yeah. So now this is a binomial distribution. क्योंकि जो 7 वाला नंबर है इसका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 0.17. क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन देखो ना 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1, 1,6. सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सिर्फ 7 का है. बाकी सबका ऐसा नहीं है. 8 का देखोगे 4 and 4, 5 and 3, 3 and 5, 6 and 2, 6 and 2. So there are like 6, 2, 5, 3, 4, 4. तो ये 3 ही है. लेकिन आप 7 का देखोगे तो 6, 1, 5, 2, 3, 4, 4, 3. तो इसका 4 है. So ultimately सबसे ज्यादा इसका 4 डिफरेंट सेट वैल्यूज बन सकते हैं. सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 7 का है. So ये सबसे ज्यादा ऊपर आ गया. So this is binomial distribution. एक ऐसे से रेज होता है फिर वहां से ऐसे डिक्रीज होता है. ठीक है. So this is normal distribution, this is students tree distribution. हम यही 2 डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा फोकस करेंगे. We won't be focusing on binomial, ये uniform distribution, ये सब हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे. Probably हम यही सबसे ज्यादा फोकस पे करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही होता है, normal distribution, students tree distribution. Okay. So क्यों हम इसी को पढ़ना है? हम और भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हैं लेकिन इसके कुछ रीजंस है. They approximate a wide variety of random variables. आपने एकदम बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स ले लिए, वो परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन दे सकता है आपको असली पॉपुलेशन के बेसिस पे. आपने इतने सारे सैंपल ले लिए, उसको आप अप्रोक्सीमेटली आप जज कर सकते हैं कि ये पॉपुलेशन में कैसे होगा. डिस्ट्रीब्यूशंस विद लार्ज इनफ सैंपल स्पेस, सैंपल साइजेस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल. तो कैसा है कि बहुत ज्यादा सैंपल साइजेस हो गया तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ला सकते हैं उसको. ठीक है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ला सकते हैं. ऑल कंप्यूटेबल स्टैटिस्टिक्स आर एलिगेंट. ठीक है, सारे कंप्यूटेबल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है, कोई इश्यू नहीं है. एनी स्टैटिस्टिक्स कैन बी put up in normal distribution or any statistic can be put in students tree distribution, and we can analyze any sort of sample with normal distribution and students tree distribution. Okay, decisions based on normal distribution insights have good track record. So ultimately normal distribution के basis पे आप जो भी decision लेते हो तो उसमें आपको अच्छा decision लेना मतलब मिलता है. And it has a good feedback, kind of good track record. मतलब लोग सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही करो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो यही चलता है. ओके, सो दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिक करवा के, तो ये जो लाइन है ये मीन मीडियन मोड इसी लाइन पे आता है. आपको याद है हमने स्क्यूनेस पढ़ा था, तो जीरो स्क्यू बोल सकते हैं इसको, न्यूट्रल स्क्यू या फिर जीरो स्क्यू बोल सकते हैं. स्क्यूनेस यहाँ इस तरफ होता था तो ऐसा बम्प होता था तो इट वुड बी अ नेगेटिव 1, एंड अगर ऐसा बम्प होता था तो इट वुड बी अ पॉजिटिव 1, बट इट्स नॉट लाइक एनीथिंग.
ठीक है, इट्स अ जीरो स्क्यू, ओके, एंड मीन मीडियन मोड एक ही लाइन पे आता है। जीरो स्क्यू मतलब मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन, ये मैंने उधर ही बताया था, एक्सेल शीट में भी करके दिखाया था। So this is also called as Gaussian distribution. It is also called as bell curve. लोग इसको bell curve बोलते हैं क्योंकि इसका ये बेल जैसा है ना शेप, बेली काइंड ऑफ, सो बेल कर्व बोलते हैं इसको, ओके। सो देन व्हिच स्क्यू इज इट? इट्स अ जीरो स्क्यू, ओके। सो अभी अभी यही इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, इसका ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ आई विल पुट अप द पेन, आई विल टेल यू लाइक व्हाट इज द थिंग, या दिस इज नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल होता है। ये जो ऐसा साइन होता है ना, ये साइन को हम डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें बोलते हैं। मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ओके। होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये टिल्ट वाला, ऐसा टिल्ट वाला साइन आ गया ना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। वो जेड में भी रहता है, जेड मतलब स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम सीखेंगे अभी। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही होता है, ओके। सो दिस इज म्यू, ठीक है। ये यहाँ जो होता है ये न्यू होता है, और ये होता है ये सिग्मा होता है, ये वेरिएंस, ओके। दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, हाउ मच डिविएटेड इट इज। वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना, वो भी रिमेंबर द फॉर्मूला। म्यू है और ये जितना डिविएट हो रहा है ये स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल, ये पीपीटी में नहीं बन रहा था तो ऑनलाइन बनाना पड़ा, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी कम है, ओके। ओरिजिन म्यू इक्वल्स टू 743, म्यू इक्वल्स टू 140, ओके। तो अभी म्यू अगर हमारा चेंज होता है और हमारा जो वेरी स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सेम है, तो बस ये पॉइंट एक दूसरे से जाएगा। मतलब ये जो हमारा पहले जो था म्यू इक्वल्स टू 743, जो इसकी बात कर रहा हूं मैं, म्यू इक्वल्स टू 743, तो अभी अगर मेरा म्यू जैसे जैसे चेंज हुआ, ये ग्राफ पूरा शिफ्ट होते गया। ऐसा नहीं कि इसका बेल ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है, नहीं, बस ग्राफ शिफ्ट होते गया, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है, सेम सैंपल है, लेकिन मीन उसका वेरी कर रहा है। मे बी हमने थोड़े और सैंपल्स ऐड कर लिए और सेम स्टैंडर्ड डिविएशन लाया हमने, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने बस वैल्यूज मतलब एक दो से कम कर लिया। जैसे एवरेज अगर कैसे होता है कि अभी मैं बोलता हूँ कि अभी आपने 1 से लेकर के 10 तक ले लिया, ठीक है। अभी आपने सोचा कि मैं सब में से दो काट देता हूँ, तो फिर आपने क्या किया, इसको -1 लिख दिया, इसको 0 लिख दिया, इसको फिर 1 लिख दिया, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट नंबर आपका 8 आ गया। तो आपका मीन ऑटोमेटिकली 2 से रिड्यूस हुआ, राइट। आपका मीन 2 से रिड्यूस हो गया, एवरेज आपका 2 से रिड्यूस हो गया। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स कि अगर आपके डेटा अगर यूनिफॉर्मली अगर रिड्यूस हो गया तो मीन फिर कम हो जाएगा और डिविएशन उतना ही रहेगा जितना भी था पहले, ओके। So I'll just erase all the drawings, okay. So now what if I change the standard deviation? If I change the standard deviation, ये साइज ऊपर नीचे हो रहा है, देखो मैंने जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ाया उतना नीचे आ गया, जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन किया उतना अच्छा आ गया। सो द लेस द थिंग इज व्हाट डू वी से, जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन है उतना हमारा डेटा सही है, ओके। क्योंकि हमारा बहुत कम डेटा मिलेगा हमें जब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा होगा। मैंने अभी अगर आपको ऐसा नंबर दे दिया 39, 238, 516, 864, कितना डिविएट हो रहा है देखो डेटा, ठीक है। x माइनस मीन का स्क्वायर बाय नंबर ऑफ सैंपल्स करते हैं ना, और उसका रूट ले लेते हैं, उसी को तो स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। तो कितना ज्यादा वेरी कर रहा है देखो डेटा, कि मतलब मैं पहले 39 बोलता हूँ, फिर थोड़ा बहुत पास वाला नंबर बोलता हूँ, फिर 60, उसके बाद सीधा मैं 200, 400, 500 में गया। तो इट इज लाइक टू मच डिस्पर्स डेटा। इतना डिस्पर्स डेटा होगा तो फिर आप डिसीजन कैसे लोगे, दैट इज द इश्यू। तो इसीलिए हमें ऐसा सैंपल चूज करना चाहिए जिसमें क्या बोलते हैं, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है सबसे कम हो, ठीक है। हमारा तो 140 था पिछले इसमें, 50, 140, सो नाउ इट इज 70 एंड दिस इज 210। सो जब 210 है तो वो कम हो गया, जब ये 70 था तो ये बड़ा हो गया, तो फिर ये थिनर टेल्स देता है, आउटलायर्स कम है इसमें ज्यादा आउटलायर्स मिलेंगे आपको,
तो आपको रेंज फिर कहाँ से कहाँ सेट करना पड़ेगा, ये देखिए, ये ना ये अगर तुम्हें अगर एक्चुअली आइडेंटिफाई करना है, सो योर रेंज वुड बी लाइक दिस। तो आप इतना ही कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि लोग इस डेटा में बैठेंगे, लेकिन वेराज अगर आप ये 70 में गए तो फिर योर रेंज वुड बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। आपके क्राइटेरिया में इतने लोग बैठेंगे, इतने लोग, क्योंकि ये जितना पतला है, ये जितना ऊपर जाता है, उतना सही डेटा आपको मिलता है, यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन। So this is standard normal distribution, that is Z. Okay, this is used to standardize the normal distribution. So ये normal distribution से और इसमें क्या फर्क होता है, इसमें mean 0 होता है और sigma equals to 1 होता है. And you know that if any data can be converted into, any normal distribution can be converted into standard normal distribution. Every normal distribution can be standardized. Okay. तो ये देखो, ये हमारा कन्वर्जन है और हम इसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, सो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल दैट इज जी स्कोर, हम इसको जी स्कोर बोलते हैं या फिर जेड स्कोर बोल सकते हैं। सो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल इक्वल्स टू ओरिजिनल वेरिएबल माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम ये एक्सेल में करके देखेंगे एक बार। ये अगला स्लाइड आ, just a second, I don't know what is happening, it's not opening. So yes, oh sorry, I opened this Ankit's data. This is Ankit's group's data. ये अंकित का एक्सेल शीट है, सॉरी फॉर ओपनिंग दिस ओवर हियर। सो 1 सेकंड, हाँ ये कल हो गया था हमारा। ओके, so this is standard normal distribution. Okay, standardization. So we have the standard normal distribution. Okay, I'll make it again for you. So standard normal distribution. Okay, the standard normal distribution. So what we get, मतलब हमें standard normal distribution मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब it should be like this. यहाँ मीन तो 0 पे रहना चाहिए, यहाँ ओरिजिन होता है एक्चुअली। देखो ये एक्सिस है ना, तो ये ओरिजिन होता है और ये ऐसा होता है, तो ये हाफ पार्ट इसका पॉजिटिव में होता है, हाफ पार्ट इसका नेगेटिव में होता है। So that should be the standard normal distribution. But now we'll be taking a kind of normal distribution which is zero skew. Zero skew वाला जो distribution होता है, ये हम zero skew वाला distribution लेते हैं। ठीक है, normal distribution लेते हैं। ठीक है, so we'll take 1, then 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5. ओके, तो अभी अगर मैं इसका हिस्टोग्राम एक बार बनाने की कोशिश करूं, so how should I get actually? No, I want in 1, 2, 3, 4, 5, 5 data sets चाहिए मुझे। So I'll go to this horizontal axis. Just see this carefully what I am doing, because yesterday Ms. Vaishnavi was facing some difficulty. So this is how, see, ये ऐसे जा रहा है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा है। अभी अगर मैं यहाँ लाइन ये करूंगा तो फिर ये देखिए ये ऐसे जा रहा है and it is coming again like this. This is a mirror. यहाँ मैंने ऐसे, यहाँ जैसा है वैसे ही यहाँ है। ओके, मिरर है ये। That is how it works. So अभी हम क्या करेंगे, इसको ना, इसको हम ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ला। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स मीन? Now its mean would be its average, right? इसका mean कितना होगा? Should be 3. Yes, it's 3. Now what would be its standard, when short form लिख रहा हूँ, standard deviation. Standard deviation of sample. This is not a corporation, this is sample. Okay. So it says 1.22. So if I just put the round thing over here. Oh, sorry. So it's coming 1.22. Okay. So actually I want to see, I just said कि इसका क्या होता है, like how it looks is this. Okay. हाँ ये देखो,
इट इज म्यू इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा इक्वल्स टू 1. मीन हमारा 0 होना चाहिए. देखो ये ओरिजिन है, दिस इज 0,0, राइट? दिस इज 0,0. ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन में ही शुरू होता है. म्यू 0 होता है, फिर सिग्मा 1 होता है. ये जो हमारा है ये 1 होता है. ओके, सिग्मा इक्वल्स टू 1 इज द डिफरेंस. दिस इज, ये स्ट्रेट खींचोगे तो, अरे यार ये स्ट्रेट खींचोगे तो फिर ये you'll get it. So 1. Okay. Yes. So I want this kind of data over here in the Excel. Okay. So what do I do over here? Yeah. So what do I do over here? I'll be first using this formula. ये formula बता था ना? This is the formula. See, x minus mu upon sigma. So whatever the value is the original variable minus mean upon standard deviation. So I'll just use this formula over there. Okay. So now I'll be creating it, subtracting by mean. I'll be subtracting each and every data by mean. Yeah. So this would be like equals to this minus this mean. यहाँ मुझे डॉलर डालना है. अभी लोगों को डॉलर क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है ना. सो आई जस्ट डू वन थिंग, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ. पहला वैल्यू मुझे सही आ जाएगा, लेकिन व्हेन आई ड्रैग इट ना, सो यू जस्ट सी, अगर मैं ये जो वैल्यू है 2 -3, सबसे मैं -3 काट रहा हूँ ना, तो ये क्या आ रहा है? दिस इज 2, व्हिच इज रॉन्ग बिकॉज इट इज टेकिंग दिस वैल्यू. ये 2 माइनस दिस एम्प्टी सेल कर रहा है. यहाँ जाके अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये D7 ले रहा है. D7 इज दिस एम्प्टी. देन ये वाले 2 में ये 1.22 ले रहा है, इसीलिए 0.78 ले रहा है. फिर ये वाले 3 के लिए 0 ले रहा है. फिर यहाँ से सारे डेटा कॉमन आ रहा है, लेकिन मुझे सबसे मीन माइनस करना है. सो दिस शुड बी फिक्स्ड. ये सारे इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए ये फिक्स्ड है, इसीलिए डॉलर वैल्यू यूज करते हैं. देखो यहाँ डॉलर. सो नाउ द वैल्यूज में चेंज. So now if I drag it, now we'll just see the value. -2, -1, -1, 000, this. Now if I calculate the mean, now if I calculate the mean for this set of variables equals average. Now mean is coming 0. Lekin what about standard deviation? This is coming 1.224, same standard deviation. So it is like हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया. ये मैंने आपको दिखाया था ना, ये शिफ्ट हो गया ना मीन. Are you getting it? कि मेरा जो ये वाला जो समझो ये वाला जो पार्ट है इसका मीन आ गया 3. ये समझो ये 3 है, ठीक है, और ये 0 है. तो ये वाला जो मेरा ग्रीन वाला पार्ट है उससे मैंने जब मीन सब्ट्रैक्ट किया तो ये सेम ग्रीन वाला पार्ट ऐसे ओरिजिन में आ गया. लेकिन स्टैंडर्ड ये जो ये डिविएशन है, ये डिविएशन मेरा 1 नहीं है. इट शुड कम एज 1. सो ये 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन. सो हाउ डू आई डिवाइड इट बाय स्टैंडर्ड डिविएशन? आई जस्ट पुट द फॉर्मूला ओवर हियर. वेट अ सेकंड. Standard deviation dividing by standard deviation. Dividing by standard deviation. Okay. So now what I'll be doing is equals to this sign divided by, ये दोनों तो सेम ही है, ये ले लो या ये ले लो, लेकिन ये डेसिमल में है, it will be more accurate. So here I should put dollar because फिर वो वापस empty लेना शुरू कर देगा. This is minus, and now if I get same value over here, same value over there. जब आप मीन सब्ट्रैक्ट करते हो तो फिर आपको ये दोनों सेम वैल्यू दिखते हैं. मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है, इसको मॉडुलस में लोगे. डू नो व्हाट इज मॉडुलस? मॉडुलस मींस नेगेटिव का पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का रिमेन पॉजिटिव. सो मल्टीप्लाई इट बाय, मतलब क्या बोलते हैं अभी, मल्टीप्लाई इट बाय -1 if it is less than 0 and multiply it by 1 if it is greater than 0. That is modulus. Okay, over here. So this is the dividing by standard deviation.
So now if I check the mean, so what do I get? 0. Okay. And now if I get standard deviation, now if I check for standard deviation of sample would be 1. So this is our standard normal distribution. So we got this. Okay. So this is I'll make it bold. This is the standard normal distribution loss. Okay. Standard normal distribution. Okay. I'll just write and give. Okay. So this is my standard normal distribution. Now if I put this for histogram, wait a second. Yes. Now if I put this for histogram, I just want to check what it gives me. Yes. Horizontal axis. Go to this bar option. Go to here, number of bins. I need 5 because there are 5 data. So you just see. Wait a second. It is not giving me the correct one. Where is this last part gone? So 1.63. So it is not showing 1.63 actually. Wait a second. I'll rectify it. So there is some issue, I guess. There is some issue over here. It is not showing exact number that I want. So what I'll do is I'll do this like this. This is the origin. Na? Ye 0 pe aa raha hai. This is 0. Okay. This is the same thing, but यहाँ 0 आ जाएगा. I don't know. There is some negative sign का issue आ रहा है histogram में, maybe something like that. But this is the 0 one. Okay. ये 0 है, and because of this raise, it's not getting raised, so that's why it's giving me a wrong answer over here. Okay, so we'll proceed with the next slide, but you will get the same thing. You'll get the same thing. ये ऐसा ही आपको मिलेगा. Okay, ये ऐसे ही आपको मिलेगा. So ये जो है आपको straight line ये ऐसे ही मिलेगा. ये mid में आएगा और ये ऐसे जाएगा, and this point will be 0. Okay. And the same distribution curve will be there. And this is the standard normal distribution curve and the origin. Okay. So we'll proceed with the next slide. Yeah. For example, this is my data set. Okay. मैंने बहुत बड़ा सैंपल उठा लिया 1 से 1000 के बीच में. ऐसे ही कोई भी नंबर उठा लिया मैंने, और ये मेरा सैंपल है. मतलब ये डेटा सेट है मेरा, कंप्लीट डेटा सेट है इसमें. And I just want to see कि मुझे क्या क्या चाहिए. तो ये पूरा डेटा सेट मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ. So what I do is I just take this normal sample लेता हूँ पहले केक का. ठीक है, एक कोई भी एक पहला सैंपल लेता हूँ. ये मेरा पहला सैंपल है. जैसे हम पूरे कॉलेज के लोगों के पास जाके इंटरव्यू नहीं लेते हैं ना कि आपका प्लेसमेंट कैसा है, आपका प्लेसमेंट कैसा है. We just catch a bunch of students. तो समझो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके आईडी है समझो ये, और मतलब यहाँ आईडी डाल दो, आईडी 985, आईडी 978, तो ये सब उनका आईडी है समझो. तो ये आपको मिल रहा है कि ऐसा ऐसा डेटा है आपके पास, और ये आईडी ही उनका रोल नंबर है. ठीक है, आईडी ही उनका स्कोर है समझो. इंस्टेड ऑफ स्कोर व्हाट डू आई वुड लाइक टू से इज उनका पैकेज है समझो. सो कंसीडर दैट दिस इज देयर पैकेज. ये उनका पैकेज है. तो आप कैसे करोगे? पहले बंदे को क्या मिला? 9,85,000. एक बंदे को तो सिर्फ 679,000 मिला है एनुअली. फिर एक बंदे को सिर्फ 13,000 मिला है. एक बंदे को फिर 3,17,000 मिला है. सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड दिस इज योर थिंग. तो ये समझो कि आपने ये पैकेज का डेटा आपने कलेक्ट किया है. इंस्टेड ऑफ पुटिंग मीन ऑन एवरीथिंग, आपने सिर्फ ये पहले एक 10 लोगों का पकड़ा है, एंड यू गेट द एवरेज एज 5,55,200 रुपीज इसका एनुअल इनकम है. ये उनका पहला पैकेज. ओके, फिर आपने सेकंड ये उठाया, सेकंड सैंपल उठाया, उसमें आपको मिला कि 4,39,500 उसका एनुअल इनकम है. क्योंकि यहाँ एक बंदे को 5,000 दिया है, यहाँ एक बंदे को 5,000 इनकम दी है. ये हो गया आउटलायर. ऐसा ही सेट कि वो एक मीन वाले वैल्यू में बैठता नहीं है, उसकी वजह से पूरा वैल्यू चेंज होता है. यही अगर ये 5 लाख वाला अगर ये मतलब 5,000 वाला अगर ये 5 लाख होता तो ये 500 होता. So that this would be above 500. Okay.
नाउ आई टेक अनदर सैंपल, सो ये दूसरा सैंपल हो गया, ये 625.3 आ रहा है क्योंकि यहाँ ज्यादा आउटलायर्स नहीं है, यहाँ मैक्सिमाइज सब हर कोई लाख में बैठता है, everybody is more than lakh, everybody is more than 2 lakhs, and some are really smart and they get 9,90,000 and this is their package. Okay, आप ऐसे करते करते गए एंड आपने फिर बहुत सारे सैंपल्स का आपने मीन किया एंड यू जस्ट कम टू दिस कंक्लूजन दैट ये इतने सारे लोगों का पैकेज है मेरे पास एंड यू जस्ट पुट एवरीथिंग, सो अल्टीमेटली इसका जो मीन आएगा ना, आपने जितने लोगों का लिया है डेटा, आपने जितने सैंपल करके बहुत ज्यादा सैंपल करके आपने जो डेटा लिया है वो ओरिजिनल मीन के विद रेस्पेक्ट से थोड़ा सा ही ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, मतलब वेरी इट विल बी वेरी अप्रोक्सीमेट टू द रियल वन बिकॉज वी आर टेकिंग मोर सैंपल. व्हाई? बिकॉज दिस इज द थियरी, the more the samples you extract or the more the bigger the samples, more closer to the normal distribution you have. Okay, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका कब होता कि आप हर एक डेटा को इंडिविजुअली एनालाइज कर रहे हो एंड यू पुट इट इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे. ओके, लेकिन अभी पॉइंट ये था आपका कि यू डिड नॉट डू दैट थिंग, लाइक यू जस्ट टुक ए सैंपल, आपने एक एक बंदे का सैंपल उठाया, एक एक डिपार्टमेंट में गए, एक एक सैंपल उठाया और आपके पास वैल्यूज आ रहे हैं. तो ये सारे वैल्यूज का अगर आप इसका सैंपलिंग करते हो, इसमें अगर आप अपना थ्योरी डालते हो और या फिर इसमें अगर आप मीन निकालते हो, so you will be closing heading toward the इसका जो मीन निकाल के आप जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वो एक्चुअल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा फर्क नहीं होता है, मोर क्लोजर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नाउ वी नीड टू सी अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के विद रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा है तो ये एरर बोला जाता है. तो वो कितना एरर है एंड डेफिनेशन उसका क्या होगा, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्ड बाय द मीन्स. तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जितना स्टैंडर्ड डिविएशन है आपके इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड एरर कि आपका कितना डिविएट हो रहा है डेटा. ओके, सो दिस इज द वेरिएंस. एरर में ये आपका वेरिएंस कर रहे हैं sigma square by small n. Standard, don't confuse this capital N with sample का डेटा जो मैंने सबसे पहले स्लाइड में दिखाया था कि वो सैंपल का जो हम पैरामीट्रिक यूज करते हैं वो कैपिटल N होता है, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का N है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो स्मॉल n है ये सैंपल का, ये नंबर ऑफ सैंपल वी हैव. So the standard deviation, what is the standard deviation? Standard deviation equals to sigma square by n. So if we just take a square root, we get sigma by root n. So this is the standard deviation. So हमें ये स्टैंडर्ड डिविएशन को ही हम ये एरर बोलते हैं, ये कितना वेरी कर रहा है. ओके, सो क्यों यूज करते हैं ये, क्योंकि ये बताता है कि हाउ वेल यू अप्रोक्सीमेटेड द ट्रू मीन, हाउ मच अप्रोक्सीमेशन इज मोर रिक्वायर्ड एंड एटसेट्रा. ओके, so this is sigma by root n, like how much it gets, the more the error gets decreased and that means the more will be the sample. Okay, standard error कब कम होता है, जब आपका सैंपल साइज बढ़ते जाता है. अभी फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गो ओवर हियर, इसमें मुझे जो एरर आता होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर एक सैंपल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैं सैंपल या इसका सैंपल हो गया, अरे पेस्ट तो अभी मैं इसका मीन निकालता हूं. फॉर एग्जांपल इसका 2 आ रहा है मीन, बल्कि एक्चुअल पूरे पॉपुलेशन समझो ये पॉपुलेशन है, जबकि एक्चुअली सैंपल ही है, लेकिन इसे समझो कि यही आपका पॉपुलेशन है, यही आपका ऑब्जेक्टिव है. तो आपने इसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लिया और देखा कि इसका 2 आ रहा है, तो फिर आपने क्या किया कि मैं और एक और सैंपल लेता हूं करके आपने दूसरा सैंपल लिया. ठीक है, ये दूसरा सैंपल लिया आपने, ठीक है, एंड यू जस्ट टेक एन एवरेज and this is the thing we need to do. So this is 3.5. ठीक है, और अभी 3344 तक पहुंच गए. So now what you do is you take this as your this thing. एक और दूसरा वाला आपने एक और सैंपल ले लिया और इसका मीन है
क्या होगा, यहाँ लेता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, equals to average. Okay, so if I take its average, you get 4. Okay, so यहाँ मैंने 3, 4, 4, 5 लिया, that means these last data, और यहाँ मैंने पहले के 4 डेटा लिया. Okay, तो बचता है only 3. So what you do is 2 plus 4 by 2. So you get the average mean as 3. और यहाँ जो 3 था वो भी आपको 3 मिल गया. So 3 plus 3 by 2 is 3 again. So ultimately आपको इसका जो डेटा आपको चाहिए था इसमें मिल गया. लेकिन what about the 3.5? ये क्यों 3.5 आया? क्योंकि मैंने ये same डेटा रिपीट किया यहाँ. Are you getting it? For example, if I add another 3 and if I put here as the formula till here, if I set it till here, तो ये जो मेरे को 2.2 आ रहा है. Okay, and if I take this as 4, so अभी इन दोनों का एवरेज मेरे को लेना है. Okay, so this will be 2.2 plus 4. I put the equal to sign. Yeah, so divided by 2. So I get 3.1, which is very much close to this 3. Are you getting it? But if I take its average, like अभी मैं इसको नहीं लेता हूँ, just put it as 0, and इसने फिर किसका एवरेज लिया? Just keep it over here. So what happens? 2 plus 2 plus 3.5 plus 4. I get 9.5 and 9.5 by 3. By, so this is again 3.166. It's not that क्या बोलते हैं, इतना दूर नहीं है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अभी इसका सबका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन से हमें पता चलता है एरर कितना है. Are you getting it? I'm just going to apply this formula. I'm just going to apply this formula. Okay, यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ. ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ. एक बार अप्लाई करके कर देता हूँ. That would be this is mean. Now ये इसका mean है. Again this is its mean. I'll just delete it. Going for standard deviation. So what is the standard deviation? क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा एरर है हमारे डेटा में. ठीक है, standard deviation of sample. Standard deviation of okay, so this is standard deviation of this, and again standard deviation of this would be, ये सब आपको प्रैक्टिस भी करना होता है. It won't come in a single day. Okay, so this is your standard deviation over here. ये आपका ये standard deviation, ये standard deviation, ये standard deviation. So what you do is आपका जो अभी वाला जो सैंपल है, मैं सपोज फॉर एग्जांपल आई टेक द मोस्ट क्लोज वाला सैंपल लेता हूँ. ये 8.6497 ये वाला लेता हूँ. ये वाला लेता हूँ. So what gets, ये जो सैंपल है इसको मैं डिवाइड बाय रूट ऑफ दिस नंबर डिवाइड करूंगा. ओके, so what is my real sample? This is the thing. But if I take it as a different sample, तो ये उतना मेरा एरर होगा. So you just see the formula over there. ये सिग्मा by root n है. Okay, root of n. That is the variance का जो variance by n को root में लेना है हमें. Okay, so it depends on number of sample you have taken. तो हमें पूरे सैंपल का एवरेज निकालना पड़ेगा. मतलब इस ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन का एवरेज निकालना पड़ेगा और इसका फिर रूट ऑफ 2 लेना पड़ेगा. Are you getting it? Or else you can directly take the root of, I'll just show you, equals to 0.816. Okay, divide by 2.
to power 0.5. That is, so this will be 0.57699913. So this is my standard error. कितना मेरा डेटा deviate हो रहा है. Are you getting it? ठीक है. तो अगर मैं ये इसको ऐड करूंगा तो मुझे इसके आसपास मिलेगा, असली स्टैंडर्ड डिविएशन के आसपास मिलेगा. If I add this with this, I'll be more closer to the normal distribution. Hope everyone is understanding. Okay. Hope everyone is understanding. Just give me a reply that everyone is understanding, or I need to repeat it. Okay, Ms. Sujata ma'am has asked a query. Okay. So hello. So if we have population of, ma'am, this n is normal distribution. Capital N is normal distribution. Okay. If we have population of, it's not sample or population, it's normal distribution. If we have population of 1000 records and plotted graph, can we put the same thing in code which will calculate deviation, regression of all records and plot the graph and get the error? That is possible. For that you need to be thorough with the formulas, because in programming every time you won't be using the libraries, because when you have too much of data, for example, I can just show the partial data of Mr. Ankit. So, sir, repeat standard error. Okay, I'll just repeat the standard error after this, after showing this. 1 second. Okay, we'll just see that it is the too much of data over here. Okay, इतना सारा data है. अभी आप सबका अगर आपको analysis करना है, so you should know the formula, because libraries can work to some extent. If you have libraries, आप सीधा values डाल सकते हो, लेकिन फिर भी sometimes it may cause some errors or it may cause some dilution, because it won't give you the desired one, what actually you want. Okay. So now Mr. Omkar Shelke is asking me to repeat standard error. Yeah. So see, what is standard error? Yeah, standard error is the standard deviation of the distribution formed by the means. तो कैसा होता है कि सबका मीन जो होता है ना, ये सबका मैंने मीन निकाल दिया, ठीक है. ये सबका मीन निकाल करके मुझे जो डेटा मिलता है न्यू और सिग्मा स्क्वायर बाय एन, ये मेरे को वेरिएंस मिलता है. तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो मुझे यहाँ मिलता है वो ही एरर है. आर यू गेटिंग इट? जो मैंने यहाँ किया, जो मैंने यहाँ किया स्टैंडर्ड एरर, यही है स्टैंडर्ड एरर. क्योंकि ये जो डेटा था मेरे पास, उसको मैंने डिवाइड बाय रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल मैंने किया. नंबर ऑफ सैंपल, सॉरी, नंबर ऑफ सैंपल ओवर हियर. ओके, this should be this. Sorry. Great, you asked this question. क्योंकि ये 4 है, number of sample is 4. अच्छा है आपने question पूछा. So now this is 0.408, and when you add this with this, you get a thing that is closer to this value. So if you add 0.408 plus 0.816497, sorry, I just forgot to put equal to sign. Formulas work when you put equal to sign. So you just get this value. See, 1.224. यहाँ तक तो मैच हो रहा है, 3 decimal places तक मैच हो रहा है. This is the error. कितना error है आपके डेटा में? Are you getting it, Mr. Omkar? No, ma'am, it is not percent error, ma'am. It is deviation error. How much area it is being, how much it is deviated. It is standard error, like standard deviation. कितना deviate हुआ है actual value से? That is the deviated error. See, because of Omkar, we got the exact answer. Okay, so since he asked, we got. See, I by mistakenly put over here 2. Actually, root of 4 is 2, so I calculated in my mind it is 2 and directly put 0.5. As if I'm taking the root of 2, I'm taking 4 values, right? So, ये 4 का root होगा. So it gave me 0.408, and when I just add with this, I get the exact value of this. Exact means approx value. इतना भी exact नहीं मिलेगा.
you will just get approx value. And let us try for getting exact value. So we'll just try this plus. Are we getting it? I just want to know, are we getting the exact value? We are not getting the exact value. We are getting till 3 decimal places. If you round it off, you will get 1.2247 or 1.225. Similarly, you will get 1.2245. That means 1.225. When you round it off, you will get the same, I guess. So you just see. So approximately, you will be getting the same. Okay. If I just put it over here for 3 decimal places. So here it is 0.1224. And if I just put it over here, like round this data. So just a small minute thing, 1.224 or 1.225. So percentage देखो, ज़्यादा फर्क नहीं है, but we get the standard error this. Okay. Similarly, यहाँ भी वो same चीज हम कर सकते हैं, like 0.816, यहाँ भी कर सकते हैं if you want. Still it is fine, क्योंकि ये 0.57735 है. So I'll just put the standard error in sample 2. Standard error in sample taken of 2. Second वाला data. Second sample का standard error निकालना है. So what I do is equal to this divided by directly 2 कर देता हूँ, क्योंकि इसमें 4 sample है. So I just put 2 over here. So this is the thing. Okay. Now it is not giving me the thing. If I add this with this, I won't be getting this. But if I take the mean of all these data and then add with this and this, then I will get this. Are you getting it? Because this sample was more accurate to the first sample. This first sample was more accurate to the first sample, but we aren't able to do it over here because we need to take the average of all the 3. If you are moving on for the sample, तो हमें इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा, इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा, इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ज्यादा परफेक्ट वैल्यू वहां मिलेगा. It just happened with this, but it won't happen with everything. You need to take exactly average. If I take average of all the standard deviation, if I take average, then we can look over that. See, this plus this plus this. So I'm getting 2.2 and I need to divide it by 3, right? 1 second. And I'll do this over here. Right. So I'm getting 0.736. So now how much sample should I take? I should take 4 plus 4 plus here also 4, so divided by 4. So that would be divided by 2 again. So when I add this with that 3 wala part, so I'll be getting 0.35 or 0.36 something. So when I do that 0.36 and when I add the 0.36 with this, I'll be getting more closer to this. Like, see, the answer would be 1.1 around SSI log. But that is not a big issue. Okay, are you getting it? आपको बस error निकालना है कि कितना error है आपके और ये वाले data. Okay. Okay, so that's it for today.